Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करेंगे पॉइंटर के पहले एप्लीकेशन का एंड दैट गोज विद फंक्शन कॉलिंग कन्वेंशंस। उसके दो टॉपिक्स है, कॉल बाय वैल्यूज एंड कॉल बाय रेफरेंस। एंड बिलीव मी, यू विल फाइंड दिस टॉपिक अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर इंटरव्यूज ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस। वीडियो के लेंथ को छोटा रखने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक दैट विल बी कवरिंग इज कॉल बाय वैल्यू एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कॉल बाय रेफरेंस को। सो एप्लीकेशन दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर दिस इज स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कॉल। तो कॉल बाय वैल्यू जब स्टडी करेंगे तो स्वैपिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे एंड उसका रेमेडी विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स will be able to watch and observe in call by reference. So in all, a very genuine topic and beautiful topic to understand and work on. Definitely ये टॉपिक आपके मशीन के ऊपर जरूर प्रोग्रामिंग के थ्रू करके देखना है। So let's move into the detailings about call by value first and उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे call by reference पे। सो आई एम बैक इन टू द टर्बो सी। पहले कोडिंग के साथ चलेंगे एंड फिर डिटेल में डायग्राम ड्रॉ करके आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, राइट? सो कॉल बाय वैल्यूज, प्लीज पे वेरी काइंड अटेंशन टुवर्ड्स this particular concept, right? Okay, so I'll go with form.c and we'll save it as demo24.c, right? Okay, and yahan pe what we'll go with is the application that we are going to study over here is two variables के values को swap करना है, right? So what I mean by that, observe this. For example, I'll be defining the variable a with the value as 5 and b with the value as 6, right? So a and b का value को मुझे swap करना है। मतलब before swapping a का value is 5, b का value is 6. After swapping a का वैल्यू होना चाहिए 6 एंड b का वैल्यू होना चाहिए 5 एंड वो अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट फंक्शंस। एंड वहां पे स्टडी करेंगे व्हाट इज कॉल्ड बाय वैल्यू एंड व्हाट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस, राइट? सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज प्रिंटफ पहले करते हैं एंड विल गो विथ बिफोर swapping a is equal to %d and I'll go with b is equal to what? %d, right? And a and b के values को यहाँ पे print करेंगे, right? What I'll do is printf and यहाँ पे I'll go with after swapping a is equal to %d and b is equal to what? %d, right? A comma b. So लेट्स सेव दिस एंड कंपाइलर इज हैप्पी। रन करेंगे। अभी स्वैपिंग अटेम्प्ट नहीं किया है तो a का वैल्यू 5 बिफोर स्वैपिंग, b का वैल्यू 6 बिफोर स्वैपिंग एज वेल एज आफ्टर स्वैपिंग आल्सो। एंड इस बीच में मतलब बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग के बीच में कॉल करेंगे स्वैप फंक्शन को एंड इसको पास करेंगे द एक्चुअल आर्गुमेंट्स एज a एंड b, राइट? ओके, अभी ध्यान से देखना है थोड़ा सा। यहाँ पे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच में चलेंगे जहां पे इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द फंक्शन एंड डिफाइनिंग इट आई कॉल्ड द फंक्शन फर्स्ट। तो अभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस फंक्शन कॉल को देख के आपको ये पता चल रहा है क्या कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है एज वेल एज डिफाइन कैसे करना है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी कीन मैनर, राइट? सो जब भी आप किसी फंक्शन का कॉल को देखते हैं, फंक्शन कॉल इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू टू थिंग्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम बताता है, एंड हाउ मेनी पैरामीटर इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट, ऑब्वियसली। सो नेम ऑफ द फंक्शन इज स्वैप and parameters are what? Two parameters, and of what type? So these parameters are of what type? Integer type, right? तो ये दोनों चीजें पता चली है।
पर फंक्शन के बेसिक फॉर्मेट के हिसाब से फंक्शन गोज विथ रिटर्न टाइप, देन फंक्शन नेम फॉलोड बाय व्हाट, इनपुट पैरामीटर्स, राइट। ओके, सो हम लोगों को ये दोनों चीजें तो पता चल गई। फंक्शन नेम इज स्वैप, इनपुट पैरामीटर टू पैरामीटर्स ऑफ टाइप इंटीजर। पर अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉल को देख के, बहुत ही आसान चीज है, राइट। सो स्वैप से निकला हुआ वैल्यू किसी चीज को असाइन कर रहे हैं क्या? वी आर नॉट असाइनिंग इट टू एनीथिंग। सो स्वैप में से हम लोगों को रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, सो विल बी कीपिंग द रिटर्न टाइप इन दैट केस एज व्हाट, वॉइड। तो सिंपल है फंक्शन को डिक्लेयर करना बाय लुकिंग इनटू व्हाट, कॉल टू द फंक्शन। सो लेट्स गो ऑन डिक्लेयरिंग दैट फंक्शन बिफोर मेन। सो फंक्शन का डिक्लेरेशन ऐसे होगा, I don't want anything written from this function. Name of the function is swap, and I'll go with integer x comma integer y, right? So integer x and y are formal parameters and actual parameters are my a and b, right? Okay, so यहाँ पे what I'll do is इसको define करते हैं, and defining के लिए I'll go with void swap declaration as it is integer x comma integer y, and यहाँ पे we'll go with swapping के लिए एक वेरिएबल लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, and what will be the logic for swapping, right? Do you agree that अभी तक के नॉलेज के हिसाब से a का वैल्यू विल गेट कॉपीड इनटू व्हाट, x, एंड b का वैल्यू विल गेट कॉपीड इनटू y, एंड फिर x एंड y में जो वैल्यूज है, सपोज x में वैल्यू है 5 एंड y में वैल्यू है 6, इनको स्वैप करना है। सो स्वैपिंग करने के लिए विल यूज वन टेम्पररी वेरिएबल, लेट अस से टेम्प। सो व्हाट विल डू इज x का वैल्यू पहले टेम्प में लाके रखेंगे, राइट, फिर x का वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा 6 एंड नाउ ये जो 5 है वो y में डाल देंगे, राइट। ओके, ऐसे करना है हम लोगों को। सो पहला x का वैल्यू टेम्प में, देन y का वैल्यू x में, एंड देन टेम्प का वैल्यू y में। दिस इज व्हाट द प्रोसेस दैट वी आर वर्किंग ऑन फॉर स्वैपिंग ऑफ दिस टू नंबर्स, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज लेट्स गो ऑन राइटिंग द कोड। सो पहले x का वैल्यू टेम्प में लाते हैं। सो टेम्प इज इक्वल टू व्हाट, x, देन x को अभी चेंज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू व्हाट, y, एंड देन y में लाएंगे व्हाट, टेम्प का वैल्यू, राइट। ओके, सो यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर, मतलब स्वैप फंक्शन के अंदर, वहां पे वो x एंड y वैल्यू स्वैप हुए हैं या नहीं वो भी चेक करेंगे। सो आई विल गो विथ इनसाइड स्वैप फंक्शन, राइट, x इज इक्वल टू %d and y is equal to %d, and यहाँ पे करेंगे x and y, right? Okay, so let's see like how we can go across this. इस कोड को पहले रन करके चेक करते हैं कि अपना इंटेंशन जो स्वैपिंग का है वो हो रहा है या नहीं, right? Okay, let's go on saving this, ask it to the compiler, compiler is happy with the code, and let's run the code, right? Okay, कोड को रन करने के बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है। बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 6, नो डाउट, राइट। स्वैप फंक्शन के अंदर x का वैल्यू 6 हुआ एंड y का वैल्यू 5 हुआ, मतलब वो स्वैप हुए। बट जैसे ही आप मेन फंक्शन में आए तो वहां पे a का वैल्यू 5 ही रहा एंड b का वैल्यू 6। जो अपना इंटेंशन था, मतलब a एंड b के वैल्यू को स्वैप करने का, इज दैट फुलफिल्ड? ऑब्वियसली नो, बिकॉज before swapping the value of a is 5 and 6, and after swapping also the value of a is 5 as well as 6, तो उनका स्वैपिंग नहीं हुआ। ये हमको चेक करना है कि स्वैपिंग क्यों नहीं हुआ। सो लेट्स मूव इनटू द कोड टू चेक आउट हाउ दिस बिहेव्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे डीबग जब करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा कि हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क, राइट। ऑब्जर्व दिस, एंड देन फिर पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करेंगे एंड फिर कंक्लूजन में चलेंगे कि कॉल बाय वैल्यू प्रोसेस में क्या होता है, राइट। सो ऑब्जर्व दिस। नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस डिबगिंग प्रोसेस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो 5 टर्मिनोलॉजीज दैट वी हैव सीन। कौन से? कॉलिंग फंक्शन, कॉल्ड फंक्शन, actual parameters, formal parameters, and scope, right? So who is the calling function? Main is the calling function. किसको कॉल किया जा रहा है? swap को कॉल किया जा रहा है। So swap is a called function. During the call, whatever we are passing, those parameters are known as actual parameters,
एंड फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन में जो यूज होंगे उनको कहेंगे व्हाट, फॉर्मल पैरामीटर्स, राइट. एंड स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स इज लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड. तो ए एंड बी लिमिटेड है, सीमित है, किसके लिए, मेन के लिए. एक्स वाई एंड टेम्प आर अवेलेबल ओनली विद इन व्हाट, स्वैप. उनका स्कोप इज लिमिटेड टू व्हाट, स्वैप फंक्शन. So let's move into the debugging activity to check out how this behaves, right? Okay, so I'll go ahead into this process. And now when I go ahead, यहां पे ऑब्जर्व करते हैं, वॉच करते हैं कुछ वेरिएबल्स को. एंड दोज वेरिएबल्स आर ए एज वेल एज बी, नेक्स्ट इज एक्स, नेक्स्ट इज वाई एंड नेक्स्ट इज टेम्प, right? Okay, so at this moment, do you agree that A and B gets the life because we are having the control inside what, main, but yet they are holding the garbage values because ये लाइन से जब आगे जाएंगे तो वो इनिशियलाइज होंगे. प्लीज ऑब्जर्व दिस. Now A got 5, B got 6, and still X, Y and temp are undefined because they are out of scope, right? Okay, तो यहाँ पे आते हैं and we are able to see, यूजर स्क्रीन दिखाता हूं. बिफोर स्वैपिंग ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 6, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं. एंड नाउ वी आर moving and we are calling the swap function, and when any function is called, control is transferred from calling function into what, called function. तो यहां पे ध्यान से देख कैसे ट्रांजिशन हुआ. we are out of main, so A and B is now out of scope, and who is in the scope now, X and Y. And please observe, A का value gets copied in X and B का value gets copied in Y. And as the values of actual parameter are copied into formal parameter, this calling convention is known as call by values. As the values of actual parameter are copied into formal parameter, we call this as what, call by value. ये तो उसका definition है, right? अभी देखते हैं अंदर क्या हो रहा है. नाउ टेम्प इज होल्डिंग गार्बेज वैल्यू. अभी टेम्प के अंदर एक्स का वैल्यू आ गया 5, तो एक्स को चेंज कर सकते हैं वाई के वैल्यू से. सो वाई का वैल्यू गोज इन एक्स. प्लीज ऑब्जर्व, राइट. एक्स में आ गया 6 एंड नाउ वाई में टेम्प का वैल्यू डाल देंगे. सो नाउ यहाँ पे उनका स्वैपिंग हुआ, राइट. बट यहाँ पे प्रिंटिंग भी हुआ कि इनसाइड द स्वैप फंक्शन the x का value becomes 6 and y becomes 5, right? Okay, and when we come back into the main, please observe, now x, y and temp are undefined because they are out of scope now. And जैसे ही main में वापस आए, are there some changes that has happened to A and B? No, they are as it is, intact. उनके values 5 and 6 ही हैं, वो change हुए नहीं. तो values किसके change हुए, x and y के, inside what, this function, right? तो यहाँ पे जिस इंटेंशन के लिए हम लोगों ने ये कोड लिखा, स्वैपिंग करने के लिए, स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यूज के लिए, राइट. तो इज दैट गेटिंग फुलफिल्ड? ऑब्वियसली नॉट. तो कॉल बाय वैल्यू स्वैपिंग एप्लीकेशंस के लिए ड्रॉबैक के रूप में उभर के आ रहा है, राइट. सो लेट्स सी लाइक व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये क्यों हो रहा है, एंड देन विल गेट टू नो some very genuine aspect about call by values, and फिर conclude कर पाएंगे with respect to a very genuine two statements जो आपको इंटरव्यू में कहने हैं या वाइवा में कहने हैं या आपको उसको याद करना है, right? So let's see like pictorial representation of what is happening through this. So let's see like what is happening into the code. So what we have is main function, and inside main function we have two variables, a is equal to 5 and b is equal to 6. I'm not writing the complete code, right? Okay, and यहाँ पे इनको declare किया था as an integer, and then we call which function, swap function, by passing the actual parameters, that is a and b, right? Okay, so now यहाँ पे जब इनको पास किया तो we could be able to see that इनके वैल्यूज कॉपी हुए किसमें, फॉर्मल पैरामीटर्स में, राइट. तो स्वैप फंक्शन कैसे लिखा था, सो यहाँ पे void swap integer x comma integer y, right?
Okay, and यहाँ पे we use one variable that is integer temp for swapping purpose, and temp में value ले लिया किसका, x का. हाँ, then x can be replaced with y value, and then y can be replaced with what, temp value. This we have done, right? Okay, now according to the specific terminologies of the function, the main function is known as what, calling function, right? यहाँ पे swap is known as what, called function. And when any function is called, right, कैसे control flow है, when any function is called, control is transferred from calling function into called function. After execution of that function, control goes back into what, calling function. ये तो हमको पता है, right? Second genuine aspect that we need to understand over here is, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो as we are calling this, right, we call this as what, actual parameters. ये है actual, and these are your formal. These are what, formal parameter. So what happens during this function call, right? The value of a is getting copied into what, x, and the value of b is getting copied into what, y, right? क्या copy हो रहा है, values. And as the values of actual parameter are copied into formal parameter, we call this convention as call by values, right? Okay. Abhi, सबसे important aspect. Now, this is what the entity that we already know, right? Okay. So, यहाँ पे उसको रखते हैं, right? Okay. And let us now talk about the scope of the variables that we have. A and B का scope is limited for main, temp x and y are limited for what, swap. So यहाँ पे जब मैं A वेरिएबल के लिए बात कर रहा हूँ, A बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ 5, and B वेरिएबल के कंटेंट बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ, that is what, 6. And यहाँ पे when I go with x, values copy हुए तो initially it becomes what, 5, and y initially it becomes what, 6, right? Okay, and temp में initially क्या value था, garbage value था, right? Okay, and then x का value is copied into temp, so x में temp में आ गया 5, y का value is copied into x, तो यहाँ पे आ गया 6, and temp का value is copied into y, तो यहाँ पे आ गया 5, right? Is it making any changes to A and B? Definitely not, right? So जब भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू के साथ काम करते हैं तो कंक्लूजन के रूप में प्लीज सी व्हाट वी आर गोइंग टू से. इन कॉल बाय वैल्यू, values of actual parameter are copied into formal parameters. In call by value, values of actual parameter are copied into what, formal parameters. And as formal parameters are different variable at different memory location in different scope. Repeat कर रहा हूं, as formal parameters are different variable at different memory location and in different scope, changes done with formal parameters are not reflected in actual parameters. इनमें किए गए चेंजेस वो अलग वेरिएबल है, अलग मेमोरी लोकेशन पे है, अलग स्कोप में है, उनके साथ किए गए चेंजेस कहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होते, एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, राइट? ओके, सो स्वैपिंग के केस में कॉल बाय वैल्यू जो है वो ड्रॉबैक के रूप में उभर के आ रहा है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट? देन फिर क्यों यूज करना है कॉल बाय वैल्यू को? सो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पे यू आर इन नीड ऑफ कि एक्चुअल पैरामीटर्स के वैल्यूज को आपको चेंज होने नहीं देना है. तो उस केस में डेफिनेटली द मोस्ट prominent aspect to use as a convention is call by value calling convention, right? तो उस केस में वो एडवांटेज के रूप में काम करेगा. अभी इस केस में this is going to work as a disadvantage of call by value because we are interested in changing what, actual parameter, but as formal parameters are different variable at different memory location in different scope, we are unable to have the changes reflected into what, actual parameters, right? So this is how you can work with call by value. So एक बार conclude करते हैं with respect to the two statements that we made about what, call by values. So in call by value calling convention, values of actual parameter are copied into formal parameters,
and as formal parameters are different variable at different memory location in different scope, changes done with them are not reflected in actual parameters. And this is what call by value process is. So obvious concept comes as, if we want to make the changes into this actual parameter, then what do we have? And that is what the next topic to come. And there we are going to study call by references, जहाँ पे actual arguments में हम लोग changes होते हुए देख पाएंगे. Right? So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. I hope कि you understood call by value and interview में कहना है दो statement, उसको वापिस repeat कर रहा हूँ. In call by value, values of actual parameter are copied into formal parameters, and as formal parameters are different variable at different memory location in different scope, changes done with them are not reflected in actual parameters. So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. जरूर ये कोड आपकी मशीन के ऊपर करके देखना है. And please try to see and understand what the call by value process is. Very interesting one, right? Okay, so keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.